अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम क्लास 8 के यूनिट नंबर 1 की रीडिंग करेंगे मीनिंग के साथ, उर्दू मीनिंग के साथ। तो उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे दूसरे वीडियो में। तो अभी आप ये जो रीडिंग है वो अच्छी तरह से सुन लें और समझ लें, उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान होगी। हमारे यूनिट नंबर 1 का नाम है फ्रेंड्स इन ट्रबल, दोस्त मुश्किल में। देयर लिव्ड टू क्लोज फ्रेंड्स बासित एंड राहील इन अ विलेज नियर हैदराबाद। हैदराबाद के करीब एक गांव में दो करीबी दोस्त बासित और राहील रहते थे। इन स्कूल दे स्टडीड टुगेदर एंड इन द इवनिंग बोथ फ्रेंड्स एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर। स्कूल में दोनों इकट्ठे पढ़ते थे और शाम को दोनों दोस्त साथ क्रिकेट खेलते थे। On weekends, they usually went to the nearby canal for fishing. हफ्ते के आखिर में वो आमतौर पर मछली पकड़ने के लिए करीबी नहर पर जाते थे। Often they also went on long walks in the nearby forest because they liked listening to the birds chirping, watching the animals at play, and looking at the beautiful flowers. अक्सर वो करीबी जंगलात में लंबी सैर भी करते थे क्योंकि उन्हें परिंदों की चहचहाहट सुनना, जानवरों को खेलते हुए देखना और खूबसूरत फूलों को देखना पसंद था। दे ऑलवेज enjoyed each other's company. उन्हें हमेशा एक दूसरे का साथ पसंद था, एक दूसरे के साथ मजा आता था। They laughed, joked and had a great time the whole day. वो हंसते मजाक करते और सारा दिन बहुत अच्छा वक्त गुजारते थे। बासित was a kind and helpful boy by nature. बासित फितरताना एक रहमदिल और मददगार लड़का था। Moreover, his parents had always taught him to be a kind, sympathetic, helpful and sincere person. इसके अलावा उसके वालिदैन ने उसे हमेशा एक मेहरबान, हमदर्द, मददगार और मुखलिस इंसान बनना सिखाया था। He behaved very nicely with all his friends, but he had a special place in his heart for Rahil. वो अपने तमाम दोस्तों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था, लेकिन राहील के लिए उसके दिल में एक खास जगह थी। बासित always helped राहील with his homework. बासित ने हमेशा राहील की उसके होमवर्क करने में मदद की। He was always willing to guide and help him whenever he faced any difficulty or problem. जब भी उसे किसी मुश्किल या परेशानी का सामना करना पड़ता तो वो हमेशा उसकी रहनुमाई और मदद के लिए तैयार रहते थे। He also gave one of his fish to Rahil when he failed to catch any because luckily Basit often managed to catch more fish than Rahil. उसने खुशी से अपनी एक मछली राहिल को भी दी जब वो कोई पकड़ने में नाकाम रहा, क्योंकि खुशकिस्मती से बासित अक्सर राहिल से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। Although Basit was very active and very intelligent, he was not good at climbing trees. अगरचे बासित बहुत चुस्त और बहुत ज़हीन था, लेकिन वो दरख्तों पर चढ़ने में अच्छा नहीं था। Rahil, on the other hand, was very good at climbing trees, as he had a tall tree in his house which he had been climbing from an early age. दूसरी तरफ राहिल दरख्तों पर चढ़ने में बहुत अच्छा था, क्योंकि उसके घर में एक ऊंचा दरख्त था जिस पर वो छोटी उम्र से चढ़ता आ रहा था। One day, Rahil and Basit decided to go to the nearby forest to enjoy the natural beauty. एक दिन राहिल और बासित ने कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए करीबी जंगलात जाने का फैसला किया। Being a natural lover, they kept walking along the path of the forest all the time, talking and enjoying the natural beauty all around them. फितरत से मोहब्बत करने वाले होने की वजह से वो जंगल के रास्ते पर चलते रहे, हर वक्त बातें करते और अपने इर्द गिर्द की कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। They were so curious about everything that they just kept on following whatever caught their attention, not realizing that they had wandered deep into the forest. वो हर चीज़ के बारे में इस कदर मुतजस्सिस थे कि जिस चीज़ ने भी उनकी तवज्जो खींची
اس کی پیروی کرتے رہے اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ جنگل کی گہرائی میں بھٹک گئے ہیں۔ Suddenly they realized that they had lost their way. اچانک انہیں احساس ہوا کہ وہ اپنا راستہ کھو چکے ہیں۔ They became very worried because their parents and the villagers had often told them about the dangerous beasts living in the forest. وہ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ان کے والدین اور دیہاتی اکثر انہیں جنگل میں رہنے والے خطرناک درندوں کے بارے میں بتا چکے تھے۔ However, they decided to remain calm, promised not to leave each other in case of danger. تاہم انہوں نے پرسکون رہنے کا فیصلہ کیا اور خطرے کی صورت میں ایک دوسرے کو نہ چھوڑنے کا وعدہ کیا۔ They kept walking through the forest, trying to find their way back home. وہ جنگل میں چلتے رہے، گھر واپسی کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ But all their effort were in vain. لیکن ان کی تمام کوششیں رائگان گئیں۔ All of a sudden they saw a huge black bear coming towards them. اچانک انہوں نے ایک بہت بڑا کالا ریچھ اپنی طرف آتے دیکھا۔ They got frightened. وہ گھبرا گئے۔ This is where Rahil showed his selfish nature and said, Look, Basit, we are in a great trouble. یہی پر راہیل نے اپنی خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو باسط، ہم بڑی مصیبت میں ہیں۔ As I see it, we have only two choices. Either we climb on a tree and save ourselves, or we start running. جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم درخت پر چڑھیں اور خود کو بچا لیں، یا پھر بھاگنا شروع کریں۔ Since I am good at climbing, چونکہ میں چڑھنے میں اچھا ہوں، I am going to climb a tree. میں ایک درخت پر چڑھنے جا رہا ہوں۔ As you do not know how to climb, it would be a good idea for you to run as quickly as you can to save your life. اور جیسے کہ تم چڑھنا نہیں جانتے، اس لیے آپ کے لیے ایک اچھا خیال ہوگا کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے جتنا جلدی ہو سکے دوڑیں۔ باسط was extremely shocked to hear this. باسط کو یہ سن کر شدید صدمہ ہوا۔ He had never expected that his friend would abandon him like this because he loved and trusted his friend sincerely. اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ اس کا دوست اس سے اس طرح چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ اپنے دوست سے خلوص سے محبت کرتا تھا اور اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ As the bear came nearer, Basit was paralyzed with fear. جیسے ہی ریچھ قریب آیا، باسط خوف سے مفلوج ہو گیا۔ Finding no other way, he quickly lay flat on the ground, stopped breathing and pretended to be dead. کوئی اور راستہ نہ ملنے پر وہ جلدی سے زمین پر لیٹ گیا، سانس بند کر دی اور مرنے کا بہانہ کیا۔ When the bear reached him, he smelled his body, probably thought he was dead, and did not touch him. جب ریچھ اس کے پاس پہنچا تو اس نے اس کے جسم کو سونگھا، شاید اسے لگا کہ وہ مر گیا ہے اور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ Soon the bear just walked away. جلد ہی ریچھ وہاں سے چلا گیا۔ After a while, Basit heard his friend coming down the tree and guessed that the bear had gone away. تھوڑی دیر بعد باسط نے اپنے دوست کو درخت سے نیچے آتے سنا اور اندازہ لگایا کہ ریچھ چلا گیا ہے۔ He stood up and looked at Rahil angrily. اس نے کھڑے ہو کر راہیل کی طرف غصے سے دیکھا۔ But Rahil, instead of feeling ashamed or apologizing to his friend for having abandoned him, just asked excitedly. لیکن راہیل نے اپنے دوست کو چھوڑنے پر شرمندہ ہونے یا معافی مانگنے کے بجائے جوش سے پوچھا، باسط, what did the bear whisper in your ear? باسط, ریچھ نے تمہارے کان میں کیا سرگوشی کی؟ From his position high up in the tree, he had seen that the bear had brought its face near the closed Basit's head and thought that the bear had said something to his friend. درخت میں اونچے مقام سے اس نے دیکھا کہ ریچھ اپنا چہرہ باسط کے سر کے قریب لایا ہے اور سوچا کہ ریچھ نے اس کے دوست سے کچھ کہا ہے۔
बासित looked at his friend angrily and replied. बासित ने अपने दोस्त की तरफ गुस्से से देखा और जवाब दिया. He advised me not to trust a friend who leaves his friend at the time of danger. उसने मुझे मशवरा दिया कि ऐसे दोस्त पर भरोसा ना करो जो खतरे के वक्त अपने दोस्त को छोड़ देता है. Hearing this, राहिल felt embarrassed. यह सुनकर राहिल को शर्मिंदगी हुई. He did not know what to say and started to walk away. उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे और वहां से चलने लगा. बासित followed him silently. बासित खामोशी से उसके पीछे चला गया. Since Rahil had seen the way out from the top of the tree, both friends quickly got out of the forest and reached their homes. क्योंकि राहील ने दरख्त के ऊपर से निकलने का रास्ता देखा था, इसलिए दोनों दोस्त जल्दी से जंगल से निकलकर अपने घर पहुंच गए. तो दोस्तों ये थी हमारी रीडिंग. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू वेरी मच.